Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बहुत ही ध्यान से देख रहा था, but it's my job. I love it, and Queenie is a friend, and we're all here for her to support her. She's very good. She's very focused in what she does. And आज के कुछ pieces जो थे बहुत ही खूबसूरत थे. Especially there were these big chunky earrings, which I loved, and I saw the men with that big flower. Then there was this beautiful square necklace, which was very grand. So lots of good, beautiful pieces, statement-making pieces, and so it was a fun show. Sometimes for me, it's so relaxing to see a fashion show where they're not my clothes. There's nothing for me to do. Just simply watch and enjoy. So I enjoyed it. Thank you so much. आप बताइए कि आपका कैसा रहा experience? I loved it. I loved it. I loved it. I loved it. So Queenie ma'am was absolutely fabulous. I absolutely love her jewelry, and it was amazing collaborating with her for my collection. So I presented around 7 pieces in the collection. So it was titled Behind the Armor. सर कितना प्राउड मोमेंट है सर आपके लिए आज ये? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं संगीत की दुनिया से हूँ. मेरी बेटी अनमोल संगीत में है. मैं छोटी वाली अदा एकदम फैशन में आई हुई है, और आज इन्होंने जो क्वीनी जी की ज्वेलरी पर अपने गाउन्स शोकेस किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा. द शो वाज फैंटास्टिक. And I love Times Fashion Week as well. I just had a fabulous time. बहुत अच्छा फैशन वीक है टाइम्स का, और ख़ास करके अभी ये फ़िलहाल पेरिस से आई है. इसके कलेक्शन वहाँ भी बहुत फेमस हुए हैं. तो खुशी होती है कि आज ये मौका मिला, और क्वीनी जी को धन्यवाद, बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक को धन्यवाद. व्हाइट थीम की आज की सफ़ेद रखा गया था, उसके बारे में थीम के बारे में ज़रा आप हमें बताइए. So it's all about accepting yourself. I tried playing with different colors of white and just being all romantic. So my romance shows in each one of my pieces. Thank you, Jim. Thank you very much. Thank you. Jewelry, of course, is done by Queenie. Queenie का show था, and I think all the pieces were beautiful, and so it's part of our art deco collection. And what I'm wearing today, I think Queenie should talk about it. You should tell them what this is. Well, she's wearing a emerald necklace, और बिल्कुल भरा हुआ है, पर फिर भी delicate है. तो even though जैसे बना है mesh type बना है, तो लगता है कि भारी है, but it's still very very delicate. You know, honestly, मैं वही I was discussing with Queenie actually कि मुझे बहुत ज़्यादा heavy pieces नहीं पसंद है, but at the same time I think I like a statement piece which is very understated luxury. बहुत loud नहीं है, it's not like shouting that अरे इतना expensive पहना है, you know. It's got so much grace and elegance in it, and that's I think what is special about her jewelry. And look at the way she's carried it off. कितनी सुंदर लग रही है. It's beautiful. ओके, इसी के साथ कोई ऐसी मेमोरीज है कोई ज्वेलरी के साथ जो आप बहुत ज़्यादा इस ज्वेलरी के साथ आप कनेक्ट हो, कोई ऐसी मेमोरी? एक मेरी मदर का ऐसा ही सिमिलर पहले कहते थे, वो हार होता था, you know, जाली वाला काम होता था. So वो मुझे बहुत पसंद था, and she wore it on her wedding. तो वो उन्होंने मुझे दिया था, and I wore it on my wedding. So that is a very special. अभी भी है मेरे पास. Yes. So that's special. जब आप रैंप पर होती हैं, ढेरों सारे लोगों की नज़रें आप पर और ढेरों सारे कैमरे आप पर होते हैं, क्या कुछ फीलिंग होती है? मैं सोच रही थी कि कमेंट्स में क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में लोग क्या लिखेंगे. Well, I mean the only thing is that you want to finish that ramp walk कि आप you don't trip. And इतनी मेहनत जाती है in putting the whole show together that you really want to do full justice to it. So बस यही होता है. I hope I don't trip. That's the only thought that I have. Yeah. थोड़ा सा अपनी साड़ी के बारे में बता सके जो थोड़ा सा बहुत ही स्टाइलिश है.
ये ईशा राजपाल ईशा राजपाल हैज़ डन द ड्रेसिंग. सारे ड्रेसेस उन्होंने डिज़ाइन किए हैं आज. ब्यूटीफुल अगेन. और मुझको लगा कि बहुत ही अगेन अंडरस्टेटेड लग्जरी था. दोनों चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी. तो बहुत ही इट वाज अ ब्यूटीफुल वेरी प्रिस्टीन शो, यू नो. I mean that's what I felt, very gracefully done. So it was a lovely show. Thank you, and you made it beautiful. Thank you. एक आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप शेयर कर सकें. Well, at the moment I'm really sorry. I wish I could. लेकिन एक फिल्म है जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ. We should be announcing that very soon. और एक वेब सीरीज़ है जिसमें मैं शायद एक्ट करूँगी. So we are in talks for both of them. So yeah. वो किस तरीके की वेब सीरीज होगी अगर आप बताएं? Web series, drama, relationship based है, and there are a lot of people in it. मैं अकेली नहीं हूँ. Sorry? Well, it's one of the platforms, not Netflix. It's one of the platforms. जी बहुत अच्छा रहा. मैं डेजावू में चला गया था अपने 10 साल पुराने करियर में, जब मैं बॉम्बे नए आया था और मैंने रैम से अपनी मॉडलिंग डेज की शुरुआत की थी आफ्टर क्रैशिंग मिस्टर इंडिया. सो काफ़ी अच्छा था टू कम बैक आफ्टर लिटरली आफ्टर 9-10 years ऑन द सेम प्लेटफॉर्म वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम. या सो एक्साइटेड. lot of memories came back and I'm happy that I got an opportunity to be part of this Bombay Times Fashion Week, and I think yes, I had fun. Well, उन दिनों goof-ups बहुत होते थे because I was quite young and I started as a model. तो goof-ups बहुत होते थे. So I remember there was a goof-up that had happened in one of my very initial shows. But I guess now after such a long period, I think I'm a pro now. So yeah, it's happy. I think I'm satisfied and the show was brilliant. The collection is brilliant, and I think I'm thankful that Queenie gave me an opportunity to be a part of her daughter's collection. Tiara, very vibrant and fine upcoming designer. She has got this beautiful ornaments and jewelry that she's been working on. Yeah, it's really a long way for Tiara, for sure. वो जी आपके आउटफिट के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि महादेव, रुद्राक्ष और ये ओम, Right. आप अटायर पूरे यहाँ पे भी जरा हाथ. Well, yes, as I said, जैसे मैंने आपको बताया कि Tiara एक बहुत ही young and upcoming jewelry designer है. So her theme was we mutually decided that we should use the theme of Shiva. She's brilliant. She has got this beautiful Om pendant that she gave me, and then she has this beautiful eagle with me, and then she has a Shiva ring. She is a Shiva devotee as well, and then we have so we have this as well. So yeah, she's here. विनीत जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा शो था. थोड़ा ज्वेलरी के बारे में आप हमें जरा बताइए, क्योंकि ये सब कुछ आपका. ये एक्चुअली मेरी डॉटर का था, द होल मेंस कलेक्शन, बट आई कांट फाइंड माय डॉटर, सो आई विल टॉक अबाउट इट. ये इनका कलेक्शन है जो इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लेंड बिटवीन कंटेम्प्रेरी एंड स्पिरिचुअल. So you'll see metal chains and all with Om. You'll see Lord Shiva in a pendant which is in a different way. And who else better than for Mohit to carry it off? And he did a great job. Thank you. As I just said, Tiara is an upcoming and bright designer. She's a really, really long way to go, and I'm really thankful that Queenie and Tiara mutually thought of me being the face of the jewelry, and I'm honored. And yes, we had a great show, and yes, we are doing good. Inspiration behind this collection is my daughter's thinking, but my collection was it's for the lady who looks ahead, who doesn't look behind, who looks forward, moves towards the light, and has a way to express. Also जो men का collection है, time आ गया कि men भी अपने आप को express करें, और अगर उनको ज्वेलरी पहननी है तो किस तरीके से पहने. और कभी कभी हम सोचते हैं कि men allowed नहीं है ज्वेलरी पहनना, but just see how beautifully men can express themselves.
Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you.